Hi. Do you know that several students, despite having good knowledge and answer writing skills, uh, fail to score the marks in of psychology optional that they deserve? Means they have capability to score more marks. They have knowledge also, writing skills also, but they do not score very good marks. Do you know the reason? Several reasons are there. So I will give several tips, and here is the one of the important tips that I am going to give. And I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS, New Delhi, in which we provide personal guidance for psychology optional. So I am trying to give one important tips. So even in test series, I have noticed that there are choices of the questions. So question 1 and question 5 are generally compulsory. So you have no choice, you will do. But in other questions, you will find combinations. So generally, because you have prepared all the areas, you find that I know answer to this question also and that question also. मीन्स आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे कभी ना कभी कमो बेश उनके सबके बारे में अच्छी जानकारी होगी. बट समटाइम some students fail to judge, you know uh, you can say that just on the basis of the first look that which question I should attempt, and that cost very heavily. वो ऐसे ही कम्बिनेशन को उठा लेते हैं, बाद में उनको रिग्रेट होता है कि आई शुड हैव taken that set. For example, question number 6, there are 3 or A, B, C section, for example, or so 15 marks, 20 marks. So they start writing and in the middle they regret. तो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि अब इसको हटाकर अब दूसरा करते हैं. इन दैट केस व्हाट हैपेंस, यू आपका यू लूज योर टाइम और concentration, and sometimes you get panic also. So all these things affect your performance. So this is very obvious thing and everybody knows that ऐसा तो करना ही चाहिए, I should do, you should do. But when they actually try to do this thing, they find it difficult to do. So before you going to go and write actual examinations, take for several sets and make a speedy decision then which one is the most appropriate decision for you. कौन से कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन करके करना चाहते हैं, और फिर उसको आप अपने से ही रिव्यू करिए कि मैंने ठीक सोचा था कि नहीं, जल्दी से विदाउट टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम दिए बिना. तो यू विल कम टू नो दैट इफ़ यू हैव सम इशूज़, सभी को नहीं होता बट बहुतों को होता है. सो दिस could be a factors, and मैंने जो देखा है आपको I can share with you that one of my students was very deserving, लेकिन उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसने क्या किया, देन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 करने के बाद एक ही सेट से सारे आंसर्स कर दिए. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर कम्स पेनल्टी मार्क्स ऑल्सो. सो व्हेन ही केम एंड डिस्कस द थिंग्स विद मी, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि अब उसको पेनाल्टी मार्क्स लेगा. तो मैंने कहा कि अब तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन यू विल नॉट बी इन अपर ग्रुप, क्योंकि तुम्हें कुछ मार्क्स तो कट के ही आएंगे. तो आप ये भी मत करना कि दैट इन हरीज, अगर पर्टिकुलरली इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट कि आपने सेक्शन ए ही से सारे कर दिए. ऐसा किया है लोगों ने. प्रेजेंटली इज़ कमिश्नर इन बॉम्बे, और अभी recently one student was from Ranchi, he did the same thing. So I will advise you that such things happen when you are slightly worried और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो चीज़ों को और उसमें वैसा कर जाते. So best instruction is that you first of all be cool, have confidence. वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एग्ज़ाम ही है वो. And then read the instruction properly
and before deciding that which answer set you will answer, read the questions and try to, if you find difficulty, then try to recall how many theories, how many concepts, how many research findings you can recollect. Within 30 seconds, 1 minute you can decide. So don't be driven by assumptions. आप जल्दी से करके देख लो 1 मिनट में, तो definitely आपको फ़ायदा होगा. तो this is the first advice for those individuals who are going to write mains examination with psychology optional. In upcoming other videos I will be guiding, जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि ये चीज़ लोग ज़्यादा कहीं कहीं लोगों ने किया है, तो definitely I will pinpoint and I will give you some tips to overcome that things. So this is the first things that I have pointed out. Thank you for watching this video.